नमस्ते प्रमुखाः वार्ताः। आदिरपल्लिस्थाने वनगजस्य आक्रमणे मृत्युद्वयं सञ्जातं। वाळचल स्वदेशस्थ अंबिका सतीश वनवासिजनौ एव मृतवन्तौ। प्रत्यावेदनं परिपृष्ट्वा वनमन्त्री आश्वाससाहाय्यं ख्यापयित्वा प्रशासनपक्षः। आदिरपल्लि नगर्याम् एतत् सम्बद्धि श्वः प्रतिषेधाचरणं भविष्यति। प्रतीकात्मकरीत्या पदनियुक्तिनिमित्तं प्रतिषेधाचरणं कृत्वा CPO महिला पदार्थिनः रैंक लिस्ट कालपरिधिः 19 दिनाङ्के परिसमाप्तिं याति। आशा कर्मकराणां निराहाराचरणमपि अनुवर्तनमुखे सन्ति। रोबर्ट वाद्रा ईडी न्यायविचारणायां पतितमस्ति। भूसम्पत्तिविषये गणनां रेखयितुं भवति तस्य समागमः। पूर्वसूचनानुसारं तस्य प्रश्नकरणं 12तमवारे भवति। न्यायविचारणा संबंधी अपराधिं मेहुल चोक्सी भारतम् आनेतुं निर्देशं दत्त्वा केन्द्रसर्वकारः विचारणानिमित्तं CBI ED जनाः बेल्जियं प्रति गतवन्तः। रुग्णबाधितः भवति अतः यात्रानिमित्तम् अशक्तः इति बोधयित्वा प्रतिरोधहर्जिपत्रं समर्प्य चोक्सी। वार्ताः विस्तरेण। अनौद्योगिकरीत्या व्याजधनसम्बन्धी न्यायविचारणायै प्रियङ्का पतिं भर्तारं रोबर्ट् वाद्रां प्रश्नकरणं कृत्वा ED विभागः 12:12 हरियाणानगर्यां भूसम्पत्तिविषये भवति निर्देशग्रहणं। रोबर्ट् वाद्रां पूर्वमपि परिशोधनासमितिसदस्याः समाहूय परिपृच्छनं कृतमासन्। व्याजधनसम्बन्धी दोषारोपणे रोबर्ट वाद्रा दहलीस्थ एन्फोर्समेंट डायरेक्ट कार्यालयमागतवान्। हरियाणस्थ गुडगांव शिकोपुर स्थाने भूसम्पत्तेः परिवर्तनकार्ये कोटिशरूप्यकाणां व्याजारोपणम् आगतमिति परिशोधना समिति सदस्याः अवोचन्। दक्षिणपक्षप्रशासनस्य कालपरिधौ 2008 3.5 एकर् भूसम्पत्ति वाद्रावर्यस्य स्कैलैट् संस्था स्वायत्तं कृतमासीत्। 12 एषा सम्पत्ति DLF विभागाय 58 कोटि रूप्यकनिमित्तं विक्रीतमासीत्। एप्रिल् मासस्य 8 दिनाङ्के न्यायविचारणा सम्बन्धी प्रथमं समन्स् प्रेषितमासीत्, किन्तु विषयसम्बन्धी कोऽपि न समागतः। अस्मात् पश्चात् एव पुनः अपि समन्स् पत्रस्य प्रेषणं। पूर्वमपि व्याजधनसम्बन्धी इतरन्यायविचारणा वाद्रा पुरतः तिष्ठति स्म। दक्षिणप्रशासनकाले वाद्रया कृत आर्थिकव्यवहारे दोषारोपणं भाजपापक्षात् प्रवृत्तमासीत्, किन्तु दोषारोपणं राजनैतिकपरं भवति इति प्रियङ्कापतिः आरोपयति। राजनैतिकमण्डलमागतुम् इच्छुकः आसीत् इत्यतः एव दोषारोपणमागतमिति वाद्रा अवोचत। सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। राष्ट्रीय वार्तादलं जनम्। बंगालदेशे प्रचलितप्रतिषेधाचरणस्य पृष्ठभूमिकायां SDPI विभागः भवति। वखफ प्रकल्पभेदगत्यनुसारम् इस्लामिकसामाजिकानां भूसम्पत्तिं सम्पादयितुं यत्नमाचरति इति आरोप्य आसीत् SDPI विभागस्य व्याजवार्ताप्रसारणमिति आरक्षकाः अवदन्। परमेव इस्लामिकविभागाः प्रकोपिताः समभवन् इति आरक्षकाः न्यवेदयन्। राष्ट्रांतर वणिक् संबंधी सेंसेक्स गणनानुसारं 50,700 समग्रे आगताः एवं निफ्टी मध्ये 50 अङ्काः अपि समग्रे आगताः। रिजर्व वित्तकोषात् सम्पादित प्रतिशतं मूल्यन्यूनता, धनवर्धना नियन्त्रणम्, उत्पादकमेखलायां वर्धितं जागरणं च भारतीय वणिक् मेखलायै शक्तिं प्रदति स्म। न केवलम् एतत् अधितारिफ् निमित्तं 90 दिनपरिधौ दीयमान डोनाल्ड ट्रम्पस्य निर्णयं राष्ट्रान्तरविपणिमध्ये अपि प्रतिफलितमासीत्। H1B राष्ट्रान्तरप्रवेशनपत्रम् अधिकारः नास्ति, आनुकूल्यं भवति इति US स्टेट् सेक्रेटरी मार्को रूबियो। अमेरिका राष्ट्रेण अनुवर्तित मूल्याङ्शानुसारमेव राष्ट्रान्तरप्रवेशककार्यकरणं करणीयमिति मार्को रूबियो वर्यः अवदत्।
इस्रायेल् विरुद्ध प्रतिषेधाचरणम् अनुवर्तितकथांशः अभवत्। साहचर्ये अस्मिन्नेव एतत् सम्बद्धि US निर्देशग्रहणं सञ्जातम्। अमेरिकाराष्ट्रस्य राष्ट्रपुरोगमनाय कार्यकरणं करणीयं, राष्ट्रान्तरिकरीत्या राष्ट्रनाशनाय मा गच्छेदिति मार्को रूबियो प्राक्सूचनां ददाति स्म। केरळराज्ये गृहे प्रसूदितजनानां स्वास्थ्यसम्बन्धी अत्याचारः अनुवर्तनांशः भवति। घटनासम्बन्धी वैद्यपरिपालकाः आशङ्कां प्राकट्य सङ्घर्षमुखमागतमासन्। मुख्यमन्त्रिणः कृते परितेवनपत्रं समर्पितमासीत्, किन्तु घटनासम्बन्धनिर्देशग्रहणम् एतावता न जातमस्ति। प्रतीकात्मकरीत्या पदनियुक्तिनिमित्तं प्रतिषेधाचरणं कृत्वा CPO महिला पदार्थिनः। റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലപരിധിः 19 ദിനാङ्के പരിസമാപ്തിം യാതി। ചൂരൽമല മുണ്ടക്കൈ പുനരധിവാസകാരിയായ അധീനതായാം സ്വായത്തീകൃത വയനാട് കൽപ്പറ്റ എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റ് मध्ये പ്രതിഷേധം ശക്തിഭദ്രം कर्तुम् उद्दिशन्ति कर्मकराः। आनुकूलांशाः पूर्णरूपेण प्रापणात् परं केवलं भूप्रदेशं परित्यज्य गमिष्यामः इति आरोपयन्ति कर्मकराः। जम्मूकश्मीरस्थ पूञ्ज स्थाने रक्षाजनानाम् आतङ्कवादिनां मध्ये संघर्षः प्रचलितः। सुरनकोटस्थ लसाना ग्रामे आतङ्कसान्निध्यं भवति इति गुप्तदलानां सूचनानुसारमेव रक्षिपुरुषाः अत्र परिशोधनां कृतवन्तः। काले अस्मिन्नेव भूशुण्डिप्रयोगः प्रचलति स्म। घटनासम्बन्धी सैनिकाय परीक्षितिं प्राप्तः समये एव आतङ्कवादिनां प्रतिरोधनिमित्तम् अनेके सेनाभटान् एतदनु विन्यस्तमस्ति इति अधिकृताः स्थिरीकृताः। ആണവപരീക്ഷ നിരാസന സംബന്ധി അമേരിക്കയ രാഷ്ട്രീയേണ പ്രചലിതമായ ദ്വിതീയതര ചർച്ച ശനിവാസരെ ഭവിഷ്യति इति ഇറാൻ। ഒമാൻ രാഷ്ട്രീയ ഭവിഷ്യति एतत् सम्बन्धि ചർച്ച സമये एव ഇറാൻ പക്ഷാत् ഉന്നീത പന്ത്വാഹനാംശാन् US സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റുബിയോ ടർക്കി വൈദേശികകാര്യമന്ത്രി ഹക്കാൻ ഫിദാൻ च दूरवाणीद्वारा चर्चां कृतमासीत्। इरान राष्ट्रस्य आणवसम्बन्धि परीक्षां स्थगयितुमस्ति आगामिकालस्य चर्चा। गतशनिवासरे अपि एतत् सम्बन्ध चर्चा प्रचलितमासीत्। चर्चा सम्बन्धि वरिष्ठनेतॄणां द्वितीयस्तरचर्चा एव आगामि शनिवासरे प्रचलिष्यति। ओमान् देशे एव एतत् सम्बन्धि चर्चा प्रचलिष्यति। इरान वैदेशिककार्यमन्त्री अब्बास् अरक्ची स्टीव् विट्कोफ् च एतदनु उपविश्यतः। आणवनिरासनं भवति मुख्या भूमिका। समये एव इरान राष्ट्रेण उन्नीत पन्त्वाहन सम्बन्धि निर्णायकांशाः US സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ടർക്കിസ്ഥ വൈദേശികകാര്യമന്ത്രി ഹക്കാൻ ഫിദാൻ च दूरवाणीद्वारा चर्चां कुरुताम्। आतङ्कवाद प्रतिरोधनं नेटो इत्यस्य शक्तिसंवर्धनं च आसीत् नेतृद्वयोः चर्चा। इरान् राष्ट्रस्य पन्त्वाहनांशान् सम्मुखीकर्तुं यूरोपीयराष्ट्राणि सम्मिल्य एव अधुना अग्रे गमिष्यन्ति। पश्चिमेष्यास्थानस्य संघर्षस्थितिं परिहर्तुम् इरानस्य आणवपरीक्षा निरासनम् अपेक्षितं भवति। राष्ट्रान्तरवार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्बद्धिते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् TV.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।